तथापि नियम के अनुसार हम आज कथा पे जो है विराम देंगे और इसी कथा प्रसंग में विचार सकते हैं। यहाँ पे पवित्र करने के लिए कल आप लोग ने बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन की उत्सव मनाया। Yesterday we celebrated Girirajji festival. गिरिराज गोवर्धन Brajvasis have for Brajvasis Girirajji is so beloved, भगवान कृष्ण जगत में and by this Giriraj Krishna showed in the world कृष्ण स्वयं that Krishna is Lord himself. मैंने कल ही बताया था। Yesterday I told जितने भी लीलाएं हैं Krishna's all the pastimes, topmost Leela is Rasa Leela. जय जय जलरस सर्परस किया भवे जथा ब्रजित विचित्र। केवल ब्रज में ही Only in Braja ये रास लीला है। this Rasa Leela happened, in other not, in Vaikunth and other places, in Ayodhya also not, राम द्वारिकापुरी में भी नहीं, in Dwarkapuri also not, in Mathura not, only in ब्रज Braj. में ब्रज गोपियां जो परक्य भाव से Braj Gopis with the Parikriya Bhav. ऐसी गोपियों के साथ कृष्ण सर्वोत्तम मधुर With लीला that प्रकट Gopis, Krishna is doing this Rasa Leela. ये लीला प्रकट करने के लिए कृष्ण For doing this Rasa Leela, for doing this pastime, Krishna specially did the two pastimes before this Rasa Leela. First is Kaliya Leela and second is Govardhan Leela. For human being, this is not possible. Human beings cannot do this. Kaliya with thousands of और दूसरी funds. 21 मील इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन So long this Giriraj Govardhan, for 7 days, 7 nights, he was holding Giriraj. कृष्ण अपने ब्रजवत्ता को दर्शन कराया, Krishna shows his दिखाया। braveness to the world, that Krishna is Supreme Personality of Godhead ये सब himself. हम लोग श्रवण करें। We already heard this Harikatha. प्रदीप हो गए Indra become क्योंकि उनकी पूजा बंद कर दिया Indra was complaining about this. He became angry. और इंद्र कृष्ण की भी Indra, गाली गलौज में he was abusing words to the Krishna. He was using, and at the end, Indra, भगवान को क्षमा करते हैं। and then he request for forgiveness to the Lord, and then Lord become pleased. Because this holding pastime of Giriraj, Indra, he did very beautiful that Purvaraga gopis, that gopis were feeling separation. They were feeling separation from Krishna. They wants to meet Krishna from long. But when Krishna, he was holding Giriraj, then all the gopis, then all the gopis, they came very close to the Krishna for 7 days, 7 nights. That's why gopis were very pleased, and so Lord was very happy, because Lord he wants, if Lord's associate is nearby him, he become happy. Especially in this world, mother and father, when family members are together, then how that world is peaceful, happy world. So in the same way, at the time of Giriraj holding pastime, gopis, especially Radharani and other gopis, they become very close. They were standing so closer to Krishna. They got this opportunity to get closer to Krishna at that time. So that's why Lord was very happy. Krishna was very happy that time. So Sukdev Goswami Pad, he is explaining, because Lord
षोडश कला संपूर्ण कार्य he is बैडमिंटन श्याम सुंदर good in 16 qualities. षोडश कला है। Solas Kala, he is good in षोडश 16 कला के qualities. द्वारा परिपूर्ण मात्रा में कृष्ण He is expert in 16 qualities. And Acharya Pad are mentioning, षोडश कला के नाम they are mentioning the name of 16 qualities of Krishna. धन संपदा Dhan Sampada, धन के देने वाले that he is giver of the wealth, money. संसार की वस्तु भी उन्हें दे देते हैं He is able to give the material things and he is able to give the, जो प्रेम भी दे he is also capable to give the Braj Prem, and that's why कृष्ण के कार्य का Lord is said as Dhan Sampada. सोलह कला में एक विशेष One of the qualities in 16 qualities in Dhan Sampada. दूसरी कहा जाता है And second one is अचल Achal, संपत्ति आदि Achal Sampatti Adi. He is able to give आप जितने भी वस्तु को मान लो whatever भगवान को दे दो। whatever anybody wants, he is able to give that thing also, any material thing also. समस्त जीवन Third one is Kirtida. He is able to give Kirtida, the fame. He is able to give the fame also. Fourth is उनके सुंदर वचनों के द्वारा by his beautiful words, he makes happy to everyone. वचन Krishna's words are so beautiful. सभी पे आकृष्ट करना Everybody get attracted with that. क्योंकि सब अवतार भी In all the incarnations are also beautiful, but when we look at Krishna's pastime, then if it, Krishna is so sweet. He is very humble. सभी के चित्त पे जो है आकर्षित करना He is attracting the hearts of everyone. So the next is Madhur Vachan, उनकी इतने and सुंदर then लीला माधुर्य and the next is Leela Madhurya. कृष्ण के चार माधुर्य बात- Krishna's 4 Madhurya are Acharya Pad have mentioned. लीला माधुर्य Leela Madhurya, Prema Madhurya, Venu Madhurya, और रूप Rupa माधुर्य Madhurya. ये चारों These 4 Madhurima, और किसी अवतार में it's not complete in other incarnation, but in Krishna, this Madhurima, this is completely in Krishna. So that's why it's called Leela Madhurya. और छठवां कहा जाता है And then 6th one is शांति। Kanti. स्वयं कृष्ण की अंग से जो Krishna's- छटा निकलते हैं। From Krishna's body, so beautiful effulgence is coming. और सभी को आकर्षित करते It attracts to everyone. So our Acharya Pad is mentioned that ये कृष्ण की अंग कांति छटा Krishna's ऐसे body बिखर effulgence जाते हैं, जैसे लगते हैं सारी तरफ बहुत is everywhere, ज्योति प्रकाश होती है। that everywhere is so much और light. ज्योति प्रभाव And उसके that- अंदर में दिव्य मुरली श्याम सुंदर की And in that light, विराजमान होते हैं। Krishna is in the center. Krishna is standing in the center with Dhir Lalitna, like Dhir Lalitna. And the 7th one is समस्त प्रकार की विद्या। all types of knowledge Krishna have. आठवां कहा जाते हैं 8th one is Vimala, अर्थात means समस्त प्रकार के सिद्धि- all types of Siddhi he have. जैसे गणेश जी के Like Ganesh ji, पूजा आदि करते हैं। people are worshipping Ganesh ji and Lakshmi, धनदात्री और सिद्धिदाता गणेश the giver of wealth, and स्वयं भगवान की चरण कमल से ही निकलते जाते हैं। ब्रह्म संहिता all में these things कृष्ण का निकाल दिया। they are obtaining from the Krishna himself. गणेश जी भगवान Ganesh की स्तुति ji, करके जब प्रणाम he करते is हैं worshipping, he is doing stuti of Krishna, and then और उस समय स्वयं and then भगवान offering pranams, and उनके then कान Lord, पर he is putting his feet on his और shoulder, भगवान के चरण कमल के and then- चरण कमल में जो सिद्धियां दे निकालते and हैं all the siddhis coming गणेश जी from के the पास हैं। Krishna's feet, they are coming to the Ganesh ji- Ganesha, and then Ganesha is जो प्रधान distributing to the other person, other jivas. उत्कर्षणी Utkarshani, प्रेरणा देने वाली prerna dene, सबके जीवन हृदय में giving inspiration. ऐसे एक प्रेरणा देते रहते He is giving हैं। हमारी inspiration. हृदय में चित्त प्रेरणा चित्त जी Chi- शक्ति कहाँ से आ जाता है भगवान From where we यही get कृष्ण this परात्पर परतत्व स्वयं power, भगवान strength in the heart. कृष्ण Krishna, he is giving this strength. यानी अपराकित प्रेरणा देते हैं He is giving this transcendental, this inspiration.
Next is Gyan, knowledge. भगवान में समस्त प्रकार की ज्ञान विराजमान है। All types of knowledge are in the Lord. समस्या जो हो जाता है तो उसके स्वयं भगवान उसके समाधान करते हैं। Difficult, the problem can be difficult, and Lord is able to solve all types of problems. Like we were listening about Giriraj Leela. Krishna, महाराज ने प्रश्न किया, he asked, Krishna asked question to Nanda Maharaj. He asked the question to Nanda Maharaj, and same time he is answering to Nanda Maharaj. परंतु लोग ब्रजवासी लोग He is asking the question to Nanda Maharaj. वो अपने नियम के अनुसार इंद्र की पूजा कर रहे हैं। That as per our parampara, we are worshipping Indra, but Krishna is saying that by worshipping Indra, the rain will come. कृष्ण कैसे सुंदर युक्ति ज्ञान आदि की तरह स्थापित कर रहे हैं। Krishna is establishing by ये the पहाड़ के knowledge इंद्र पूजा करते हैं, बारिश होती है that on the mountains rain is coming, in the sea rain is there, rain is coming. It will happen by Indra Puja? No, it's not. वो तो प्रकृति अपने क्रिया आदि So करती रहती है। nature is working on its own. जगत भी परिवर्तित है। संग भगवान का Lord himself is saying nature, करते ही है। it's working on its own. किंतु ये प्रकृति कैसे काम करती रहती है? Nature is working भगवान के आदेश से। under the guidance of Krishna. सूर्य, तारे आदि Sun, moon, stars, constellation, आदि से सब कुछ all they are working under the instruction of all the demigods and demigoddess. They are working under the guidance of, under the instruction of Krishna. Like Indra, Brahma. वास्तव ब्रह्मा कोई व्यक्ति विशेष Brahma is not a human being. This is a post. That is a position, post. आप भी You can, 100 जन्म if you will for 100 births you will follow the Varnashram, then you can also, you will be also able to attain the Brahma position. You can also get that position. So this is mentioned in the Shastras. Who will become the Brahma and when he become the Brahma. Shiv also is like position. ये समस्त शास्त्र में पढ़ना All these are mentioned in the scriptures. 17 जन्म में जो कुमान 100 जन्म For 100 births, वर्णाश्रम जन्म के who follow the Varnashram properly as per the rules and regulations. Brahmachari, Grahasth, Vanaprasth and Sannyas. ये वर्णाश्रम जन्म This is the Varnashram dharma. If somebody follows properly, Varna and Ashram, Brahman, Kshatriya, वर्ण और आश्रम में रह करके the person who is staying in their Varnashram and then he is following their rules and regulations for how many years? 100 births. 100 births. 100 जन्म पालन करने पर वो And if he follow for 100 births, then he will be able to get the position of Brahma. 100 जन्म But for getting ऐसे this, वर्णाश्रम पालन करने वाले व्यक्ति it's not easy to get the person who is able to follow these in for the 100 births. स्वयं भगवान क्या करते हैं? If that person is, the Lord cannot get that kind of person, so Lord himself take that position. So one type is Jeev Koti Brahma and second one is Ishwar Koti Brahma. एक कहा जाता है वैराज ब्रह्म One is Viraj Brahma and second is Hiranya Brahma. Two types of Brahma. So in the same way, Shivji, शिव तत्व जी Shiv हर Tattva. कल्पों में ऐसी कोई जीव नहीं मिलेगा In all the kalpas, it is not easy to get the person who can get the position of Shiv. So Lord himself, स्वयं शिव he take the position of Shivji. ग्रहण कर He accept the position of Shivji, and that Shivji is known as Sadashiv. ये विष्णु तत्व है। That is Vishnu Tattva. Lord himself, इसे कहा जाता है ईश्वर कोटि that is called Ishwar Koti Shiv. और जिस कर्म में ऐसे जीव And in which kalpa, तो मुझे मिल जाता है in which kalpa और उस जीव a human being is able to attain, so that time that person gets that position, that is called Jeev Koti. ये दो प्रकार के शिव So हैं। two types of Shiv. एक ईश्वर कोटि जीव One is और Ishwar एक- Koti and second one is Jeev Koti Shiv. ये समस्त बहुत All these things, सिद्धांत हमारे आत्मा this Tattva Siddhant are Acharya Pada are भगवान mentioning. सब कार्य करते रहते So Lord is doing all these things. हैं। इसलिए कह रहे हैं, देखो
स्वयं भगवान So Lord, समस्त प्रकार के ज्ञानों के द्वारा with all types of knowledge, He is able to solve all the problems. क्रिया Kriya, स्वयं भगवान Lord Himself, ऐसे कर्म सब अपने कार्य अपने हाथ से करते रहते। He is doing His work with His own hands. Dwarkadish Krishna, Mathuradish Krishna, and Brajanendra Nandan Krishna. भगवान एक है, Lord is one, विलास में but for doing the pastimes, He प्रकाश करते is coming in three forms and He is showing three different dhams. संस्कृत के रूप में प्रकट होते हैं। In Vrindavan, Brajendra Nandan Krishna is staying in eternal. वृंदावन छोड़ करके मैं एक पैर भी कहीं Lord is saying, I never come out, I never keep even one step from Vrindavan. विराजमान Brajendra Nandan Krishna always stays in Vrindavan. और उनके दो प्रकाश And he is two expansions. One is Vasudev Krishna. मथुराधीश कृष्ण Mathuradish Krishna always stays in Mathura. And Dwarkadish Krishna, द्वारिकापुरी में he always stays in Dwaraka. ऐसे एक मधुर This लीला है। Krishna Leela is so beautiful pastime. वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं और मथुरा से फिर Krishna is going from Vrindavan to Mathura and from Mathura to Dwarka, but actually he is not going. कथा स्मरण करेंगे। You will listen this Harikatha ये कृष्ण that Krishna, वृंदावन से जब मथुरा गए when he went from Vrindavan to Mathura, when Akrurji, रथ में बैठा करके when वृंदावन से जब when Akrur was taking Balaram and Krishna in his chariot, when the border of Vrindavan and Mathura comes, और उसी समय and at that same time Brajendra Nandan Krishna, he disappeared from the chariot, और मथुराधीश and Mathuradish Krishna, रथ में he seated in that chariot. People are thinking that Vrindavan Krishna, मथुरा चले। he is going, he went to Mathura, but this is not real. So this is internal things, secret things Aracharya Pad is telling, is mentioning. You cannot get this information by reading the Srimad Bhagavatam. So our Acharya Pads are giving this example. So from Mathura to the Krishna is going from Mathura to Dwarka. मथुराधीश कृष्ण मथुरा के छोड़ करके Mathuradish Krishna is going from Mathura to Dwarka, but actually he is not going. एक सब को अंतर्ध्यान हो जाता है। He also disappeared, और एक सौ रुपए में and in one form, Mathuradish Krishna is staying in Mathura, and one form he is going in Dwarka. उसी प्रकार So our Acharya Pad are explaining these things. So Radharani, Krishna's Haladini Shakti, उत्सव मनाया। Radharani, we yesterday celebrated Radharani's birthday. Radharani is Krishna's Haladini Shakti. आनंद Anand. प्रेम की साक्षात मूर्तिमान है। Radharani, स्वरूप राधा विभिन्न Radharani is pleasure potency of Krishna. वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ही नित्य वृंदावन Radharani and Krishna always they stays in their eternal world. Radharani is also have three expansion in Braj, Gopis, और दूसरी and second is द्वारिकापुरी में in Dwarakapuri Mahishis, and third one is वैकुंठ में in Vaikuntha, नारायण के जितने भी लक्ष्मी all the Narayan Lakshmis. राधा जी ऐसे स्वरूप Radharani, she is appearing in that forms. क्योंकि स्वयं कृष्ण वैकुंठ में नारायण Because Krishna, he is appearing in Vaikuntha, and Radharani also appearing in one form in the लक्ष्मी Vaikuntha, के रूप में in the form of Lakshmi. और स्वयं कृष्ण Lord वृंदावन में himself, जब रहते हैं कृष्ण श्रीमती राधिका पूरा और when Lord is staying in Vrindavan, Radharani is staying with Radharani is staying with Krishna. महिषियाँ कौन है? And this Maheshya, in that is one extension of Radharani. So these Siddhant Aracharya Pada mentioned. Rukmani is the expansion of Chandravali. Satyabhama is the expansion of Radharani. फिर पुनः सात संहिता में So in Sansanita, Samita, मूल जो श्रीमती राधिका विश्वभानुनंद भी श्रीमती राधिका the original Radharani, that is Vrishbhanu संयुगिनी Nandini, राधा और एक is again divided into योगिनी two. राधा One is Sayogini Radha and second is Vyogini Radha. नित्य
कृष्ण के साथ रहने वाली यह विश्व आनंद The Radharani who always stays कृष्ण with के Krishna साथ नित्य is वृंदावन में who always stays with Krishna in Vrindavan in invisible form. In invisible form. और उनके दो प्रकाश एक है And her two expansions are, one is Vyogini Radha. वो उद्धव प्यारी में She stays in Uddhav Kyari. She always feeling pang of separation from Krishna. That is in Brahmar Gita. Radha Rani's bhav mentioned. Radha Rani's Unmadani, Radha Rani. By looking at Radha Rani's these moods, Uddhav was so surprised that then he understand what is the real love. इसलिए उसी कहा जाता है So that is called वियोगिनी Vyogini Radha. और एक राधा है And संयोगिनी one Radha is Sanyogini Radha. Second type is Sanyogini Radha. That Sanyogini Radha, कृष्ण के साथ हैं। she meets with Krishna in Kurukshetra. So these are very secret things. Aracharya Prat are explaining. इनका हम इसी कार्य कृष्ण So Krishna, देखो सब प्रक्रिया आदि है Krishna is doing अपने जोग माया के द्वारा all these activities with his Yoga Maya, with the help of his Yoga Maya. जोग माया में एक तो कला कह देते हैं जो And then next is कृष्ण स्वयं Krishna himself. जीवन के एक मन All the Krishna, all the Jiva's heart is known as Chandra. मन की अधिष्ठात्री देवता कौन है? Heart चंद्रमा। presiding deity is moon, but original moon is Krishna. कृष्ण चंद्र। So with Krishna we say like Krishna Chandra. देखो अनेक तत्व सिद्धांत Many Tattva Sundar Aracharya Pat are explaining. यही मन हमें जब जो हो जाता है भगवान के साथ If that heart is connected with the Lord, then we are able to go to the eternal world. फिर करें कृष्ण चंद्र विनयी भी Krishna is very humble also. वो प्रतिक्रिया आदि करते हैं। He is very humble and doing activities. अहंकार रहित किसी प्रकार अहंकार नहीं रखते। We don't have any type of ego. स्वयं कृष्ण के जो है मथुरा के राज्य दे दिए। He gave कंस के the kingdom to the Ugrasen. He killed the Kans and he gave the kingdom. But he got the kingdom, but he made the king to the Ugrasen. स्वयं कृष्ण सिंहासन में नहीं He doesn't become the Mathura Desh. और उग्रसेन के जो है And he gave the kingdom to the Ugrasen. See, कितनी स्वयं भगवान उदार है। Lord is very humble. सत्यवाद भगवान Satyavad. सदा सर्वदा सच बोलते Lord always speaks truth. Lord never speaks हैं। lie. इस जगत में हम लोग Lord, इसके Lord झूठ never बोलते हैं, tell lie. किंतु पारमार्थिक जगत में देखें तो सत्य है। In this world, what we say is जैसे lie. In कुरुक्षेत्र the के युद्ध में eternal world, it is स्वयं भगवान युधिष्ठिर के true. बोले युधिष्ठिर Like को बोलो, in Kurukshetra असत्यमा, war, Lord says to असत्यमा, Yudhishthira Maharaj, you say that Ashwatthama is dead. Yudhishthira Maharaj said, I always speaks truth. असत्यमा जीवित I am looking by my eyes that Ashwatthama is still alive. बोलना नहीं चाहते। I don't want to say this. भगवान कृष्ण ने किया। So Lord, what he did? भीम के बोले देखो He said एक हाथी आ रहा है। He said to he instructed to the beam. His name was Ashwatthama. कहने लगे Lord, भीम, he इस said, हाथी को तुम मार दो। You kill this elephant, and then Bhim killed that elephant. And Lord said that now you say. Lord said to the Yudhishthira, now you say that Ashwatthama he is dead. And then Yudhishthira he said that Ashwatthama he dead, human being or elephant. When he was going to speak the animal or elephant, so at the same time Lord he played this conch, and then everyone and
that he was not able to listen तो the यहाँ पर word प्रश्न उठता है, elephant, and then युधिष्ठिर he युधिष्ठिर killed the महाराज Dronacharya, सच नहीं the बोला। Draupadi brother. He killed the Dronacharya. So if you speak the lie for Krishna, that is not actually lie. If you speak lie for Krishna, that is not actually lie. Who will decide that this is lie or truth? It will completely decision of Krishna. If you speak lie for Krishna, स्वयं भगवान that कहते is not मेरे लिए lie. So Krishna is telling, is explaining that if you do some pap, if you do और मुझे pap, छोड़ करके नहीं तो that is सदाचार also की पालना dharma. करें। Dharma. But leaving me and you do all the things, all the activities, then you will not get any result. बात क्या होगा? Then you will not get वो any लोग fruits. सदाचार शुद्ध सदाचार पालन Some करें। people are following like वर्णाश्रम proper धर्म rules. नहीं They पालन are, कर they रहे, are following the varnashram लेकिन dharma, भगवान के भजन नहीं but they are not doing bhajan of Krishna. करते। उसके फल क्या हो गया? Then what they will श्रीमद् get? The भागवत में fruits. कौन है? In Srimad Bhagavatam, उसके it मृत्यु is के mentioned पश्चात that after the वो भी death, नरक में जाना they है। have to go in नरक में the hellish planets. ये स्वयं भगवान के भजन नहीं कर रहे। The person who is not और doing सदाचार bhajan पालन of कर रहे bhajan, but they are following all the rules and सदाचार regulations. समझ You understand the meaning of sadachar? उठ करके Like they are waking up in the morning time, they waking up and taking bath. They never speak lie. ये तो भगवान के भजन नहीं करते। They are doing good activities, but they are not doing bhajan. So what will they will get the result? What will पूरे the शास्त्र fruits में they कहा will है, get? उसमें भी So in the Shastra it is mentioned they have to go hellish planets. वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भेजे, शस्य कर्म करने से रोगी पूरी होगी। चार वर्णी और चार आश्रमी 4 ashram and 4 भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं। if they are not फिर वर्णाश्रम following, धर्म से पालन ठीक से करें। if they are not doing the bhajan of Krishna, but they are following the varnashram dharma, but still they have to go to the hellish planets. अगर कोई एक बार प्रभु की If the शरण ले लेते Prabhu, if anyone just one time take the shelter of Krishna, they don't have to go to the hellish planets. That like in morning I told, साधु एव समंतु समूढ़ धर्मस्ति गीता में भगवान का in Bhagavad Gita, Lord is explaining that, oh Arjun, please listen. मेरा अनन्य होकर के एक A very bad person who is doing bhajan मुझे छोड़कर किसके भजन and he is नहीं taken my shelter, he is one pointed, then he will come to me. भजते मां अनन्य भाग साधु रेव समूह उसके साधु You should understand that person. मंत्र कौन है? You should understand that person as sadhu. This is my conclusion. आदेश जैसे है। Like a decision of Supreme Court. Lord Himself is saying that भजते मां अनन्य भाग साधु रेव समंत साधु he is sadhu. He is not a sadhu. Why? Because his behavior, his sadhu मैं behavior. भगवान हूँ। Because I am Lord. उनके जितने भी दुर्गुण हैं All the bad qualities in him, मैं उनके क्या करूँ? I will सब नाश करूँ। I will- उत्तम भवति धर्मा। I will correct them. I will destroy all the bad qualities in him. उत्तम भवति धर्मा। Lord Himself is अति saying, सत्य जल्दी वो very soon धर्मात्मा he will बन become Dharmatma. He will become the मेरे saintly शरण में person. आ गया ना Because he उनके came in साथ my सुधार shelter. करके I will clean मैं him. उनकी I ही will correct him. परम I बुद्धि will में improve him. And then I will take him to the इसलिए भगवान कहते हैं, सर्व my धर्मं planets, परित्यज्य my dham. मामेकं So that's why Lord is saying, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मां। संसार के वर्णाश्रम धर्म हम त्याग दे हमें पाप लगेगा नहीं? if we will leave this varnashram dharma of the भगवान world, क्या करे? then that is तो sin. सुनो, But Lord is saying to Arjun, तुम जो सोच रहे हो what you are कि thinking, वर्णाश्रम धर्म आदि that त्याग varnashram, देने if से some पाप person will leave that होगा। varnashram देखो, dharma, मैं तुम्हें वचन but दूंगा। I'm promising to you, सर्वधर्मान् Sarvadharma परित्यज्य Parityajya, मेरे शरण में तुम्हारा if a person will come under my shelter, I promise, मैं भगवान हूँ। because I am Lord, my परम ईश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह मैं परमेश्वर हूँ। I am Lord. इसलिए मेरा मैं तुमको समस्त प्रकार से पाप से मुक्ति दूंगा। I will make you liberated from all the sinful activities. Because Lord, one name is Mukund. He is able to give liberation. That's why Lord's one name is Mukund.
who is capable to give the liberation from all the sinful activities, that is Mukund. A person who comes just once in the shelter of Krishna, he destroy all the sins of that person. So this Gita, so beautiful, this mentioned by our Acharya Pad. Whatever Lord is saying is actually truth. Whatever Lord is saying, that is truth. In Srimad Bhagavatam, how it starts, how Srimad Bhagavatam starts, how it is begin, Satyam Param Dhimahi. Param Satya is the real truth is Krishna. Lord is embodiment of truth. If leaving Lord, we do whatever thing, that is called sinful activity. From outside, it can looks like good, but if we will go inside, then that person have to go also in hellish planets. If you are not worshipping, if you are not worshipping the Supreme Personality of Godhead, but you are following all the rules and regulations, then still you have to go to the hellish planets. And the next one is Adipatya. Lord, He is a controller of everyone. Brahma and all the big demigods, all they are offering their pranams to the Lord. In the 12th canto, it will be explained. Brahma, Varun, Indra, and all the big these demigods, all they are offering pranams to the Lord Krishna, and they are offering their stutis. And many, all the millions and millions of universes, Brahmas and all the demigods, they are offering pranams to the Krishna. Once four-headed Brahma, he got some doubt in his heart. Brahma started thinking that I am the creator of the world, because in the Shastras it is mentioned if somebody gets ordinary post, what happens? He becomes so proud that I am doing all these things. So in the same way, Brahmaji, he have that ego that I am the creator of the world. But who have given you the power to do to create this world? But Brahmaji forget. So that's why Brahmaji, the four-headed Brahma, in this material world we are staying, that is the smallest one, the tiny one. So this world is this material world. Brahma's head is 4 heads. So if this universe will be double, then the Brahma's head will be also double. So this is mentioned in the scriptures. So in the universe we are staying, this universe is known as, this is the tiniest, this is the smallest one, the tiniest, lowest. So this Brahma, he went to the Lord in Dwarkapuri to meet with Krishna, and at that time Dwarkadish Krishna, he was in the Sudharma Sabha, and Brahmaji he came, and when he came, the security guard, the doorkeeper, he stopped him. Please stay, where he wants to go. Brahmaji said, I want to meet with Krishna. He said, please wait. Without
Lord's desire, you cannot go. Lord's permission, you cannot go inside. ब्रह्मा एक सिक्योरिटी So गार्ड security guard, हो गए सुधर्म सभा he went भगवान inside के the कहने Sudharma लगे, Sabha and he told to the Krishna, Dwarkadish Krishna, that one person आपसे मिलने के लिए is outside waiting to meet जब you. भगवान कृष्ण Lord कहने लगे, said, कौन आएगा? Who is he? बोले, नाम तो मुझे पता नहीं है। That security guard said, I don't know whose name, what is his name. So Lord said, ब्रह्मा ask जी the name. अहंकार हो गया। Brahmaji, he become egoistic, he become proud. है? So आपको परिचय क्या है? doorkeeper, he said, who are you? ब्रह्मा जी का ध्यान ब्रह्मा जी मेरे said, परिचय में चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ। I am Chaturmukh, I am four-headed ब्रह्मा Brahma. क्या बोले? I am चतुर्मुख four-headed चार मुख वाले Brahma. में ब्रह्मा। I am four-headed Brahma. है? हमारी एक मुख है। We और have ब्रह्मा के कितने one मुख head है? and Brahmaji have four heads. इसलिए उनका अहंकार हो गया। So he become proud. है? हम एक मुंह की तरह बोलते हैं, वो कितने? We speak with one mouth and he speaks with four mouth and he was speaking with so proud. मुंह के जाकर के बोलो। Tell to the Lord that four-headed Brahma have came. द्वारपाल Oh, आकर so doorkeeper, he went inside भगवान की and he कहने told to कृष्ण के the कहने Lord चतुर्मुख that four-headed Brahma have came. भगवान कहने लगे चतुर्मुख ब्रह्मा। Lord said, okay, four-headed Brahma, परिचय पूरा परिचय लेकर के आओ। get the full details about बोले, him. आपके परिचय दे दो। So then again, doorkeeper came to the Brahma बोले, that कुछ नहीं। give me the complete details. Do you have identity भगवान card? तो द्वारपाल फिर पुनः आकर के बोले, So again, आपके पूरा the परिचय। doorkeeper, बोले सनत पिता। so he said that I am Sanak, I am the father of Sanat Kumars. I am the father of Sanat Kumars. I came to meet to the Lord. द्वारपाल So then doorkeeper, पुनः जाकर के भगवान again के he कहने went to लगे, the Lord and he said that चतुर्मुख ब्रह्मा that four-headed Brahma and the father of पिता है। Sanat Kumars, he came to meet you. भगवान ने And then Lord said, आने दो। okay, let him come देखो जब inside. भगवान जब ब्रह्मा जी Then when Brahmaji, कृष्ण के निकट जब आए, when he came in front of Krishna, and at that time Krishna, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मा जी ने जो है he remembers हजारों millions of millions of Brahmas with thousands headed Brahma. इस जगत में He remember. कितने मस्तक है? 5 उसी प्रकार Shivji have 5 अनंत heads. करोड़ ब्रह्मा So जिनकी अनंत करोड़ मस्तक हैं। Brahmas who have thousands of heads, they're like in the same way Shivjis, all the Shivjis with many heads, they appear there. All the Indra, they appear there. And they were offering their stutis, pranams to the Krishna. The four-headed Brahma, चार मुख वाले ब्रह्मा that four-headed Brahma, वो देख रहे हैं सब he was looking at all the Brahmas किंतु with देखो many हजारों heads. मस्तक वाले जो ब्रह्मा जी आई हैं, The thousands-headed Brahma, वो एक दूसरे के देख नहीं रहे। all the Brahmas, they are not able to see each other, and they were doing pranams, they were offering pranams and doing stutis. मस्तक की जो मुकुट जो है, उस मुकुट And से लगने से ठन ठन the crowns from their heads, they were making the noise tan tan. And that four-headed Brahma, he was looking to everyone. आठ That मस्तक वाले ब्रह्मा जी ने तो that eight-headed Brahma, he came there. 16-headed Brahma, he came there. 32-headed Brahma, he came there. 64-headed Brahma, he came there. So like 4 times, 2 times headed Brahmajis, they came there, and they were doing stutis to the Lord. ब्रह्मा जी देखकर Brahmaji, he was so surprised ब्रह्मा की इतने विशाल शरीर that Brahmaji from other universes, their body was so big body. So the four-headed Brahma, he was looking like a small mosquito in front of all that big Brahmas, like in front of elephant. The mosquito is like very small. So Indra, not only Brahma, Indra, all the big Dikpals and all the demigods ब्रह्मांड से वाले from many universes, they were doing stuti of the Lord. ये ब्रह्मा देख करके आश्चर्य
this four-headed ऐसे Brahma स्तुति becomes करके सब surprised. सभी लोग चले गए। When after doing their stuti, all they disappeared. Then that four-headed Brahmaji, भगवान के निकट आ गए। he went closer to the Lord. He went to the Lord. जब आगे When he came, भगवान को नमस्कार करते हुए Lord was giving this कहने लगे, ब्रह्मा जी, smile to आपके the. आने की कारण क्या है? Then the Lord asked to the Brahmaji, "Tell me the reason why you came here." ब्रह्मा जी कहने लगे, Then प्रभु, Brahmaji came. The Brahmaji said that मैं जिस कारण से आया हूँ तो दर्शन the के लिए, reason I came ये here, मैं बाद में बताता हूँ, I will tell you later. बताता हूँ। किंतु मेरे मन में एक संशय था। But in my heart was a doubt. There was a doubt in my heart. What was that मैं doubt? सोचता था, I मैं was ही एक thinking ब्रह्मा that हूँ। I am only one, this four-headed Brahma. I am only Brahma. There is no other Brahma. भगवान करने लगे, So Lord says, हे ब्रह्मा, "Oh Brahma, please listen. मेरे योग माया के द्वारा By my yoga maya, there are many universes. अनंत करोड़ ब्रह्मांड, There are आकाश के thousands हम सारे of नक्षत्र भी गिन universes. सकते हैं। We are able to count the stars. It's not possible, but still, if somebody says that in the sky, if somebody able to count the stars, constellation in the sky, but there are thousands and millions of universes, nobody can count. So Brahmaji was surprised. ब्रह्मा ऐसे सुंदर सुंदर जी, हम इसे करें। That's why I'm saying, करें स्वयं भगवान Lord is saying, सत्य के अधिपति है। Lord is the controller of everything. भगवान Lord is इसकी कैसे Bhagavan himself. How we will establish that? Krishna Stuti, Bhagavan Swayam. इंद्र आदि देवताओं के चरण में आपने स्तुति अर्चना की। All the Indra and demigods, they are offering their pranams to the Krishna. और स्वयं भगवान सबके अनुग्रह भी करते, कृपा भी करते। And Lord himself is giving mercy to everyone. कोई भगवान के निकट में आ जाए, If somebody comes under the shelter of the Lord, he gives mercies to everyone. Lord's mercy is Anugrah and Nigrah. Both are, he is killing to the demons, and then he gave the liberation to the demons also. Like we heard, like Agasur Bagasur, ऐसे असुरों की वध करके भगवान के like he killed these demons and he gave पतारी गतिदायक भगवान the highest places to them. स्वयं भगवान श्री हरि के हाथ से जो मर जाता है, The person who killed by the Lord, he got the liberation and he got the highest planets. इसलिए अनुग्रह भी करते हैं। So that's why it is called Anugrah. भक्त के अनुग्रह करते हैं He और असुरों के is निग्रह giving करके भी Anugrah to अनुग्रह the Lord, to the devotees. इस प्रकार So in the स्वयं same, भगवान कृष्ण के स्वरूप पुरुष कलाकार हैं। these are the 16 पुरुष qualities of कलाकार Krishna. हैं, वैष्णव संत। Krishna have these 16 qualities. यही कृष्ण लीला इतने मधुर है। This Krishna इसलिए pastime is so कृष्ण के जितने भी beautiful. अवतार आदि हैं, All the incarnation, in all the कोई अवतार incarnation, आदि कृष्ण से कोई भेद नहीं है। there is no difference between all the incarnation. शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कृष्ण As per और the जितने अवतार जितने भेद नहीं है। there is no difference between all the incarnation. Ram, Narsimha, जितने अवतार Vara, सब कृष्ण से ही Kalki, प्रकट हुए। all they are coming out from Krishna. They are expansion of Krishna. नाना अवतारों मुकुलो भुवनेषु किंतु कृष्ण संपरम अवत परम पुमान गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में In Brahma Samhita, वर्णन करते हैं it is तो mentioned ये आदि पुरुष गोविंद that original person राम Krishna, आदि उनकी अवतार उनसे ही प्रकट हुए। और कृष्ण के all क्या this Ram and all the incarnation coming out from the Krishna. Krishna is called Avatari. सर्व अवतारी वर्णन संसंग इसलिए ब्रह्म संहिता में स्पष्टीकरण करते हैं। In the Brahma Samhita, it is mentioned कला निमित्त कृष्ण नाना अवतारों मको भुवनेषु किंतु कृष्ण संपरम परम पुमान गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। इष्ट संग भगवान की लीला ऐसे मधुर है। So Lord pastime is so beautiful. Lila Madhurya, Prema Madhurya, Rupa Madhurya.
Vedu कृष्ण में इतने Madhure. सुंदर रूप में और अवतार में नहीं, All these Madhure are in only in Krishna. They are not in other incarnation. It is partly mentioned in other incarnation, भगवान के but जितने in भी Krishna अवतार it हैं, is fully in Krishna. सभी में तो सौंदर्य माधुर्य है। In all the incarnation there is beauty, but if we deeply analyze, गंभीर रूप में देखें we will कि कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य Krishna's कितने सुंदर beauty. है। बोले दूसरी अवतार पे छोड़ दिए, जैसे कृष्ण के जो द्वारकाधीश के जो अवतार कहा जाता Krishna's है, Dwarkadish Vasudev Krishna. चतुर्भुज कहा जाता है। Chaturva, that is called Chaturva, वासुदेव कृष्ण Sankarshan, गोविंद के रूप Pradyumna, देख करके and स्वयं ही आश्चर्य हुए। they are also surprised to see गोविंद the के form of माधुर्य देखी, Krishna. वासुदेव को, स्वयं वासुदेव कृष्ण Vasudev Krishna, he also, गोविंद की सुंदरता से रूप देख when करके he saw the beautiful form of Krishna, he also becomes ये तो भी surprised. स्वयं कृष्ण वृंदावन कृष्ण Krishna himself, Brajnendanandan Krishna, Yashodanand Krishna, अपने परछाई को देख करके when he see महिमाएं his shadow, करने, when he sees his shadow, अपने परछाई को देख करके कृष्ण when he looks at his shadow, that my form is so beautiful. जैसे हम लोग हर रोज Like तिलक every करते day हैं, when we are putting the तिलक tilak, करने के समय हम क्या करते हैं, what we are doing for putting the tilak, शीशा व्यवहार करते हैं, we are using the mirror, तो अपने मुख को जब हम देखते we are हैं, looking at our face. किंतु अपने को देख करके अपने आप मोहित नहीं होते, We are not attracted when we look किंतु to देखो स्वयं भगवान ourselves, but Lord, वृंदावन संत Brajnendanandan अपने Krishna, परछाई को देख when करके he looks at अपने his मुख को देख shadow, करके आश्चर्य, he becomes so surprised that I am so beautiful. My form is so beautiful. These all things are mentioned in the scripture. In the Srimad Bhagavatam, it is mentioned. The commentators have mentioned these things, that Krishna's form is so beautiful. केवल ब्रज में स्त्रियां नहीं, गोपियां नहीं है, कृष्ण के माधुर्य देख करके मोहित हुए। Not only Braj gopis in the Vrindavan, they are attracted towards कृष्ण के इतने the सुंदर रूप form of रूप Krishna. के देख करके Krishna's so beautiful form that cows, Vrindavan cows, वो देखते रहते, they just looking at Krishna, staring at कृष्ण के Krishna. वंचित धनी Krishna's सुन करके voice घास of flute, they also become attracted. नहीं खाती। They don't eat the grass. ये गोद दी जब पक्षी The birds, वृंदावन की पक्षियों के Vrindavan birds, how is their situation when they listen the flute of Krishna? सुख सारी तोते मैना All the भगवान parrots, cuckoos, all these वृंदावनी तस्मिन become so attracted. This is mentioned in Venugit. गोपियां करे देखो Gopis, they are saying that Krishna is so beautiful form. दशा कैसे See what is their situation of the cows, birds, and अनेक भागवत में ऐसे सुंदर in the Srimad Bhagavatam with many beautiful verses it is mentioned. वितनोति कीर्तिं जगदेव किशुतो पदाब्दलक्ष्मी गोविंद वेणुर्मत्त मयूरनित्यं प्रेक्षादिशं वरतां समस्त सत्यं कृष्ण के वेणु ध्वनि सुनकर के मोरनी विराज गोवर्धन Peacock and peahens तलहटी में लंका फैला करके with their wings they start dancing in the Giriraj. वृंदावन में कृष्ण जब विचरण In Vrindavan, Krishna is walking in Vrindavan. When Krishna is walking in the Vrindavan, when there are footsteps of Krishna, and when they look at the footsteps, when Brahmaji and demigods they look at the footsteps of Krishna, they start doing stuti of that footprints of Krishna. See the situation of trees when Krishna entered the Vrindavan. What they are doing? They are giving everything to the Krishna with their beautiful flowers.
They are decorating entire Vrindavan with their beautiful flowers, with the petals of the flowers. They are thinking that in Krishna's feet are very soft. No thorn should touch the Krishna's feet. So trees, what they are doing with their beautiful flowers, petal, they are decorating the Vrindavan. गोविंद के हवा भी करते हैं पंखा जो They are blowing the wind also to the Krishna with the leaves. गोविंद की भूख लग जाते हैं When Krishna is feeling hungry, the trees, what they are doing, they are giving the fruits to the Krishna. लगता है अपने आप नृत्य The करना creepers, they start dancing on its own. इसलिए हमारा आचार्य So Acharya Path in Vrindavan, पूरे ब्रह्मचारी गृहस्थ के ब्रह्मचारी वानप्रस्थ समाज की कोई जरूरत नहीं Brahmachari, Vanaprastha, Sannyasi, they are not related. Only Grahasthas are staying in Vrindavan. क्योंकि गृहस्थी तो भगवान की सेवा करते हैं Because Grahastha are serving the Krishna. ब्रह्मचारी कहाँ जाते हैं Brahmachari, गृहस्थ में they, जाते हैं भिक्षाम देहि। Brahmachari, they are going in Grahastha ashram to ask वानप्रस्थी for the कहाँ जाते alms. हैं Vanaprasth, where they are भोजन going के लिए for the food गृहस्थ के आश्रम में। in the Grahastha ashram. सन्यासी कहाँ जाते हैं Sannyasi, where they are going in the Grahastha ashram. इसलिए कहते हैं कि तुम वृंदावन में So in Vrindavan, आचार्य पाठ Acharya Path are ये explaining वृक्ष मानव पुरुष जाति these है trees are like a लगता है मानव male form, and स्त्री है the creepers are like female form, and the fruits are the son, and flowers are देखो daughters. So how that house become wife and husband, son and daughter, with the same mood they are serving to the Krishna. हमारी गृह कैसी होनी चाहिए How our house should be in this way. पति एक तरफ चले पति दूसरी तरफ If wife is going in other direction, wife is going in another direction, son is going in another direction, daughter is going in another direction, that house is not ये house. सुख तब हो जाता है एक ही There will be happiness in the house when they all have same modes towards Krishna. They are serving Krishna together. So see the the Vrindavan trees, how they are. इसलिए बता शास्त्र में ऐसे In the scripture it is mentioned. धन्नास मुर्गतो हिरण्य एका जानंदन पथ विचित्र वेश आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा बुद्धि ब्रज प्रणयाम रूपी गोविंद के वेणु ध्वनि सुनते ही Krishna's हिरण्य flute, हिरण deer and deeress, स्त्री और पुरुष male and female deer, they are running. Sukdev Goswami Pad, he is telling to the Parikshit Maharaj. धन्नास मुर्गतो हिरण्य एका 9 बजे निकलने संस्कृत हैं, में 9 बजे निकलना है आपने. उंगली निर्देश करता है देखो Sukdev Goswami Pad is pointing to the deer. गोविंद के वेणु See the ध्वनि situation सुनते of ही deer. बस सब After listening the flute of Krishna, they are running towards Krishna. And male and female deer, they are coming in close to the Krishna. So in the pilgrimage place, if you are going, you should not go alone, you should go. पति पत्नी The wife and husband, they should go together. परमार्थ प्राप्त करेंगे And they will be able to get this, इसलिए मानो the benefit, they will be able to get the transcendental benefits. So, so that और साथ ही साथ हिरण पुरुष पुजारी नहीं चलता when the female deer, she listened the flute of Krishna, she is running, and then male deer said, oh, you are going to the Krishna, I will also come. So in the Shastras also mentioned, and also Vaishnav, they also पुरुष जो दान करते हैं ना state the male, what उसके they are आधा donating, आधा दान पुण्य कहाँ पर चले that जाते 50% benefit, हैं के पास चले जाते it goes to the हैं। females, स्त्री जो दान करते the हैं ना, wives. वो अपना ही रहता पूरा And the wives, if they are donating anything, the 100% benefit stays with them. मैं तो सुना बोलता I have, maybe it's mentioned in Shastras. हिरनी जो है So it is like female deer. She is running to महापुण्य तीर्थ पद running to see the Krishna, जिनके Lord. चरण कमल में अनंत करोड़ तीर्थ जो है So male elephant is also, male deer is also. So I also want to come. करने के लिए
जब हिरणी जब जा रही है when male deer is और उनके going पीछे मानो and उनके then पति हिरण male deer is saying, मैं क्यों पीछे रहूं why I should left behind? नहीं आगे। So they are going together to see the Krishna. हिरण्य एक जानन पत विचित्र वेशम आकर्ण वेणु गणितम सह कृष्ण सारा। देखो हिरण्य की स्थिति कैसी है। See the situation of गोविंद के deer. सन्निकट में आ गए, निकट में बैठ करके they are- गोविंद के कितने सुंदर रूप दर्शन कर। They are और कानों के standing द्वारा in गोविंद के front of भजन Krishna and they are listening sweet ये flute सह of कृष्ण Krishna. सार दो बात तो बताए। There are एक two प्रकार के meanings. हिरण कहा जाता है, One type of कृष्ण deer सार is मृग हिरण कहा जाता Krishna है। Sar. और कृष्ण Krishna सार Sar. जीवन की सार क्या है? What the is, essence of what our is life. the essence of our life? जीवन की सार है गोविंद भजन, Govinda गोविंद Bhajan, दर्शन। Govinda Darshan. यदि गोविंद के दर्शन नहीं किया, If we are not able to get the darshan of Krishna, if we did not perform the bhajan of Krishna, then there is no benefit in the life. 10 मंजिल बना दिया, If you बेटा make बेटी को 10 बहुत floors लिखा पढ़ा सिखाया, and you make educated to your son and daughter, sometimes we are going in रिटायर्ड लोग per, हैं ना, like there are retired players. सब इकट्ठे होकर वही करते हैं। They are मैंने इतने पैसे they are discussing that I collected this much of money, I was this officer, I was this officer, I make this much of floors, my son, I make my son IAS officer, I did this and this, all my works are done, all my responsibilities are कुछ finished. नहीं के जीरो। So they don't know, they have done zero in their life. समझिए अच्छी तरह से। Please understand this तुमने जीवन में carefully. क्या किया? What you have done in your भजन किया life, कि did नहीं? you perform Bhagavad अरे इतने Bhajan? मकान बनाने वाले कितने You बड़े are- बड़े राजा। Kings, many kings have also made this, many floors, many buildings. कितने कितने मकान बनाने वाले, रहने वाले, People who have made और so वो big मकान buildings, मिट्टी के and then नीचे भी चला। they are भूचाल होती they है। burned into the अभी तक भी land. होती मिलेगा। Floods come, the मंजे storms दो come. हड़प्पा के कथा आपने जाना। Harappa Katha in the history, कितने युग युग हजारों युग in thousands years back, if you will see that many kings they came, they make many big kingdom, but it is now disappeared. So you didn't perform the bhajan, so that means you didn't do anything in your जो life. ये सब पुरुषान भजन्ति और जानन्ति तास पतन्ति अभ्यं। अनेक कार्य कर दिए किंतु भगवान You have के भजन नहीं done many things in your life, but you've not performed the bhajan, then it's zero. You have not done anything in your life. एक कृष्ण सार एक मृग का Essence of कृष्ण सार मृग कहा जाता है हिरण। like तो ये Krishna जंगल Sar में रहता Krishna, है। he always ये stays सूरजालु के in the सामने deep उस हिरण के देखने forest से because he is not able to tolerate the जो heat. महाधनी बन जाता है। If some person is able to see that Sham Krishna like deer, then that person become wealthy. And second is Krishna Sar. जीवन की सार क्या है? What is the essence of life? Essence of life is Krishna संतान Bhajan. संतति पालन पोषण सभी तक करते हैं। Everybody is taking care of their son and daughter. जीवन में कुछ लाभ नहीं, There is no benefit. सब कैलाश के भांति है सब। Everybody is like Kailash. गुरुदेव कथा सुना देते। Gurudev used to tell this Harikatha. कैलाश था। Kailash. बहुत लंबी चौड़ाई कहानी। This is very long story. बहुत कुछ कर लिया जीवन He में। did many things in the life. He never did bhajan of Krishna. इसलिए कृष्ण इसे कह रहे धन्नात्म मृगत हिरण्येता जानन पत विचित्र वेश आकर्ण वेणु रणितं स कृष्ण सार सुजा धन विजय प्रणया बोलते। देखो Gopis are saying, कि हिरण्य की दशा देखो। see the situation of deer, male and female deer. गोविंद के निकट में बैठ नहीं पाए। We are gopis, we are females, we cannot sit closer to the Krishna. But see, this so fortunate, this male and female deer, they are sitting so closer to the Krishna and with their eyes, प्रेम की मानो विनिमय कर रहे हैं। they are exchanging the love with Krishna. See, so beautiful these moods. इसी प्रकार वेणुगीत भगवान के So in Venugit,
रूप Lord, so माधुर्य, beautiful this वेणु form, माधुर्य, Venu Madhurya, लीला माधुर्य, Leela Madhurya. कितने सुंदर So लीला जी करते beautiful. रहते हैं। These pastimes are going स्मर on. गरुड़खंडनम यम शीरसि मंदनम देहि तम पद पल्लव बंधारम। प्रेम की माधुर्य बन प्रकाश की। This किसी Prem अवतार में Prakash, संभव नहीं। this is not mentioned in any रामचंद्र other में संभव नहीं। incarnation. In Ram Avatar, it is not possible. रामचंद्र मर्यादा में ही He was determined in his limits. आ चली आई प्राण जाए गुरु कुछ भी हो जाए अपने नियम के पालन। He was so determined in his rules and regulations. सुंदर लीला And Krishna is doing so beautiful these अपने प्रेयसी pastimes. श्रीमती राधा दी गोपियों के प्रेम में वशीभूत होकर के He is so much प्रेम भिक्षा मांग रही है। He is so much attracted towards the love of Srimati Radharani. धीर ललित नायक Gopis. इतने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। This Dhir Lalit Nanak so beautiful. In Nayak and Nayika Tattva this is mentioned. ये राधे तो अपने महान रूपी गरल पे जो है Hey Radharani, उठाओ you please lower down this man. You please break your man. नहीं But still Radharani, she is not breaking her man. तब स्मर राधा कृष्ण कह रहे स्मर कलखनम मम शीरसि मंडलम मैं अपने सिर को जो है तुम्हारे So what Krishna is saying, I'm offering my feet to. अभी राधा जी ने देहि What Krishna is saying to Radharani, I'm offering my head to in your feet. ये राधे So तुम्हारी चरण कमल जो मेरे सिर पर but still Radharani is not breaking her man. So Krishna is saying, you please keep your feet on my head. काफी संभव Lord Ram will say like this? Never, he will never say like this. इसी अवतार में ये लीला नहीं In other incarnation, never happen like this. So that's why Leela Madhurya, Venu Madhurya. समुद्र की उत्ताल तरंग के भांति Like the waves in the ocean. इसे देखो Krishna's pastimes are going कृष्ण like कैसे this. सुंदर रासलीला So Krishna's Rasa Leela is mentioned in the now will be Kirtan and then we'll explain the आज कृष्ण कथा के दिवस में Today is the last day. कृष्ण कन्हैया मुझे मोर मकर बंसी वाले जय जय श्री राधे कि गजब की बांसुरी भजती है मुरली कन्हैया मांगे मुरली या मुरली के बजैया जहान काम होता था पगारों से गुरुदेव ने बड़ा ही सफल सा वर्णन किया है मुरली का हमारे ठाकुर जी का मुरली का आनंद हम भी लेते हैं बड़े प्रेम से बड़े भाव से में जाओ बलहार रसिया में जाओ बलहार रसिया
जब ठाकुर जी की खुशी बसती है तो व्रत की लोग बड़ा ही संसार व्यक्त करती है और ये यहाँ पर तो सब बैठे हुए तो थोड़ा सा नृत्य का भी आनंद ले सभी खड़े होकर नृत्य जरूर करें।
सखी करे लड़की दासी जैसे सखी करे लड़की दासी गोस्वामी महाराज की जय जय दीननाथ। इस बच्चे के लिए भिखारी बनाइए, हमको मठ में देने वाले इसके बाबा हमको मठ में लेके इनके बाबा आए, तो महाराज जी के बाबा का बहुत सम्मान करते थे। नाम का प्रचार महाराज जी जब थे हमारे साथ थे, तो नाम का प्रचार हाउस प्रोग्राम में लेके चलते। उनके लड़के इनके पापा ओम प्रकाश और इनके बाबा खजानची राम
इसलिए पता कि डाक खाने की है कैसी, वो मुझे मठ में ले जाएगा वापस आ जाएगा। जय जय श्री राधे। कौन आ रहा है? हेलो, मैं अपने गुरुदेव This is to my Gurudev, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, प्रणाम करता हूँ। from Dandavat Pranams. मैं And just मेरा स्पिरिचुअल नाम my spiritual name is Krishna Kripadas, that Gurudev has given by his mercy. इसके पहले मेरा जो स्कूली कार्य नाम हो कैलाश My karmi name was Kailash Pandey, but now spiritual name I have is Krishna Kripadas. Very nice name, I love this name. Before my name was Kailash Muni Pandey. हाँ, आपने कृष्ण कृपादास नाम दिया। Gurudev Krishna Kripadas. Gurudev is saying, now you have mercy of Krishna. Krishna मैं Kripa. गुरुदेव के संपर्क में आया, जो मेरे एक रिलेटिव हैं श्यामदास जी के माध्यम से। With my relative through Shyamdas Prabhu, I met with Srila Gurudev, and slowly I heard about Gurudev, and then I started to follow Ekadashi fast, and then many people व्रत में रहते हैं, आलू खाते हैं, in the fast they put some cumin, tomatoes, and potato. They mix many things and eat. But Shyamdas Prabhu told us you have to eat everything properly. Even many people drink tea. So everything they told me. पानी तो व्रत करता था। I used to follow fast before. I used to drink water, but tomatoes, cumin, now I don't take all this. मैं अकेले खाता हूँ, कहीं बन गया है वहाँ तो खाना ही पड़ेगा अगर कोई प्रसाद में है, लेकिन मेरी इच्छा अंदर से इच्छा नहीं करती है, I don't eat. चाय तो पीना ही छोड़ दिया। I have completely stopped drinking tea. Before I used to drink a lot of tea. All this is possible. This transformative experience that I am facing is very beautiful. और ये सब हुआ है गुरुदेव की। This is only has coming from the mercy of Srila Gurudev. मेरा ऐसा मानना है। So just I believe सभी लोगों को everybody follow Ekadashi, and everybody in your life. If you work, Guru are two types, I believe. One is your Shiksha Guru, one is teaching you, telling you everything, and one is a spiritual Guru. आपको आध्यात्मिक गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ती है। You must need a spiritual Guru because भगवान की प्राप्त करना है, if you want to attain God, तो आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से then you can only go by the mercy of Adhyatmic Guru, a spiritual Guru. चुनना पड़ेगा। And a spiritual Guru you have to choose wisely. वो कौन है? Who is qualified enough? This you have to decide. Our Guru Vaishnavas, they are highly qualified. Getting association of them is extremely rare for millions of lifetimes. So just I think this Guru Vaishnava that we have, they are very nice. Only with their guidance we can do bhakti and make our life successful. Because there are many bogus gurus in this world also. We are absorbed in material life also. But bhakti of God is very important. So we are living the life in Grasta Ashram. So we need money, right? For that we have to do something. But simultaneously, to attain God, we must chant holy names. And that is can only be done under the guidance of Guru Vaishnava. And that Guru Vaishnava must be like our Gurudev because he is highly qualified. Guru should not be like this, they are eating tobacco, pan, many things, and you make Guru like that. No, Guru must be like Srila Gurudev. This is what I feel, and just I request to everyone, everybody come. Guru Vaishnava like this don't come again and again. Their association is extremely rare. So all you take Harinam initiation from him, take Diksha initiation from him,
Also, आप लोग माला कीजिए chant holy names. और मेरा यही सब लोगों से निवेदन Just I है, request to ज़्यादा से everyone, ज़्यादा आज अंतिम दिन है, भगवत Today is the last day of सप्ताह Bhagavad का Saptaha. यही अनुरोध है कि ज़्यादा Just से I ज़्यादा request to लोग everyone to आएं more and more और people कथा का लाभ come उठाएं और and take हरिनाम benefit करें। of this katha and take Harinam. धन्यवाद। Thank you. Today is last day. Give to Pandit ji also. ओम ज्ञानतिमिरं यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो महाभगवानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सती श्रीमद् भक्तिवेदांत प्रभु गोस्वामी So I महाराज offer obeisance to my Shri Gurudev. अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं गुरुदेव से कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सती श्रीमद् भक्तिवेदांत में वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेश ओम Offer विष्णुपाद my obeisances to the whole Guru Parampara. नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं अहित कृपा की कांक्षा करता हूँ। Pray for their causeless mercy. जैसा कि पिछले 6 दिनों से For the past 6 days, गुरुदेव के मुखारबिंद से from beautiful lotus lips of Srila Gurudev, we are drinking the nectar of Srimad Bhagavatam. आज 7वां दिन है। Today is the 7th day. आज विश्राम हो जाएगा। Today is the last day of Srimad Bhagavatam. Tomorrow early morning, Srila Gurudev has a flight to Delhi. तो So आज today बहुत ही सुयोग्य दिन is very super excellent auspicious बहुत day, ही पवित्र दिन very हम pure लोगों day के जीवन में उपस्थित हुआ है। in our lives. We are so fortunate. From the past 6 days, we have been associating with such a high class bona fide exalted saint. गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। देखिए श्रीमद् भागवत कथा में Srimad Bhagavad Gita, the last slok is यस्य नाम Yasya Nam Sankirtana. सर्व पाप विनाशति। नाम संकीर्तन के द्वारा ही सभी पापों का नाश हो जाएगा। तो इसलिए नाम संकीर्तन की महिमा इतनी है लेकिन हम लोग समझ नहीं पा What is रहे। of holy name are so much. ऐसे गुरुजन बार हम लोगों को नाम की महिमा बता रहे हैं, नाम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। He is inspiring to us. हम लोगों के मोहल्ले में, हम लोगों के गांव He is traveling to each and every corner of the world बार भ्रमण to preach the glories of the holy name.
is requesting to us to chant holy names क्योंकि सभी शास्त्रों का because सार in all scriptures भागवत है और the essence is Srimad Bhagavatam सार and नाम संकीर्तन है। इसलिए नाम संकीर्तन ही जीवन में धारण करिए, बिना किसी संकोच के, बिना किसी Without भ्रम any के, hesitation, without- बिना किसी मतलब कोई भी चीज आप अपने मन में बिल्कुल Don't भी keep मत anything in रखिए your heart. कि हमें नाम संकीर्तन नाम करेंगे तो If कोई we will do दिक्कत हो जाए, क्या हो Harinam, जाएगा, we will be in any problem. क्या हो जाएगा। Before we were doing something, now we will do something. Whatever Gurudev is saying, just follow that. भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के Lord is saying that leave all the religion and just come under my shelter. पापों को I will खत्म कर दें। I will destroy all your तो इसलिए sinful activities. आप बिल्कुल भी So देखिए हम लोगों का एक बात you please, I want to tell you one thing, that these kinds of saint persons when are coming, we are keeping the faith, we are doing service to him, but we don't want to follow his instructions, but we want to do what we want. But तो ऐसे गुरुजन की बात you will get the benefits only when you will follow his instructions. गुरुदेव के मुखार बिंद से जो जो शब्द Whatever Gurudev is speaking with his lotus lips, that is the essence of all the scriptures, and that we have to follow in our lives. If Gurudev is saying that you have to do this but not that, तो हमें बिना सोचे विचारे वैसे ही करना whatever चाहिए। Gurudev is saying, we have to follow that without thinking for a second. ऐसे गुरुजनों को Because these kind of saint persons, these kinds of Gurudev, भगवान को हम साक्षात नहीं देख पा we रहे cannot see the Lord by our eyes. We are able to see the Lord in the form of Vigrah. But we are thinking that this is marble deity, this is wooden deity, because we don't have that kind of Shraddha, we don't have that kind of intelligence. But we have so beautiful form of this Gurudev, and we can speak with them, we can serve them, we can exchange our emotions, we can speak with them. So I'm requesting to you, all of them, all of you again and again, you should be not have fear of any kind. You should just make relationship with Harinam. Gurudev is saying again and again, Gurudev always says, you should not leave anything, you should just join in your life Harinam. With the Harinam, you will get all the good fortune. I have seen that the Ramcharitmanas and all the Ramayana, they are going on regularly. We are also arranging. We are inviting to other this Brahmins, and we are spending 10,000, 15,000. Then what we are doing, that they are doing that Ramayana, we are just eating and sleeping. We don't know, they are skipping few pages, they are eating tobacco, they are drinking alcohol. We don't know about that. उत्पत्ति कैसे हुई तो आप लोग अचंभित हो जाओगे, लेकिन मानोगे नहीं फिर भी, क्योंकि ये सारी चीजों आप All these things, Surti, कहाँ से उत्पत्ति हुई, from where तो this आप Surti is obtained. ये क्या होगा? So you will be surprised at what is going on. That Tulasi Katha I have learned that the Surti, it is made from the blood of cow. सुर्ती में ऑनलाइन इसमें सुना था तंबाकू लोग खाते तंबाकू तंबाकू सुना था कि एक बार भगवान का कहीं युद्ध हो रहा था इंद्र से या किसी से, तो कुछ रक्त जमीन पे आया था, वही सुर्ती बन गई थी, कुछ ऐसा एक कहीं सुना था मैंने। तो इसलिए सुर्ती वगैरह और ये तंबाकू वगैरह this tobacco, नहीं धारण करना चाहिए, सब छोड़ना the चाहिए। alcohol things, a person should not consume this. This will only harm the body. This will not give any benefit तो to the body. इसलिए So आप that's सब why जीवन में हरिनाम को जोड़िए you should और हरिनाम से only do कल्याण Harinam, होगा। and this will और give सबसे बड़ी good बात है कि fortune. गुरुजनों के ऊपर विश्वास रखिए, You should have faith in श्रद्धा रखिए। Gurudev. You should जो have faith. गुरुदेव बोल रहे हैं Whatever निश्चित Gurudev ही is वो चीज आप speaking, करिए,
वही चीज से अपना कल्याण होगा। You should just follow that. By that only you will be able to attain everything in life. करो नहीं करो, You लेकिन will आप समझ believe or लीजिए not, कि ये नाम महाप्रभु जो है, नाम this चिंतामणि। name, this name can fulfill all your desires. जो इच्छा करोगे वही Whatever चीज हो you जाएगा। will आपको धन चाहिए, धन you मिल want, जाएगा। जो भी you कुछ want चाहिए, wealth, आपको money, वो चीज हो जाएगा। whatever you want, इसलिए you will be able to गुरुदेव get आज only सुबह by सुबह doing करना the Harinam. बोल रहे थे Gurudev was कि telling सुबह morning उठते Hari ही Katha. Gurudev was सबसे पहले telling आप अपने when you बिस्तर wake up पे in the ही morning, हरिनाम कर लीजिए। when you are क्या पता sitting उठने on के your बाद bed, पास में you कोई should डंक do लगा, Harinam, कोई भरोसा? because when you are going in bathroom and taking bath, you will come back from the bathroom or not, nobody knows. So that's why whenever you wake up, instant you have to do Harinam. Harinam. There is no rules and regulation for doing Harinam. In any condition, any circumstance, you can do Harinam. For mantra, you should be pure. There are rules and regulations. But for doing Harinam, you can do at any time, at any place, any circumstance, you can do Harinam. So, you should accept this Harinam and follow this. Gurudev is giving Harikatha from these 6 days. It will be very difficult for us when Gurudev will leave this place. But 7 days, these are the rules at 7 days. Bhagavad Saptah. So I am praying to the lotus feet of Gurudev that we don't have any kind of knowledge. We are just speaking. We don't have any kind of bhakti. But you are merciful. You please be merciful upon us. हम लोग आपके चरणों के दास हैं। We are the servants of your lotus feet. Please accept us. कम से कम साल में एक बार 2-3 दिन का प्रोग्राम यहाँ जरूर हो। Please do ऐसी कृपा जरूर हम these लोगों को programs कीजिए। once a year for 2-3 days. जो लोग यहाँ वंचित रह रहे हैं आपके दर्शन से, People who are staying, the people who are staying here, they can get opportunity to get your darshan. I will say this. जो है ऐसी ही कृपा गुरुदेव की बनी रहे हम सबके ऊपर। Gurudev, please be merciful upon us. Where is Shyam Prabhu? श्याम श्याम ओम ज्ञानंजन समाप्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वनिति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। श्री बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अकेले इतना तेज बोल रहा हूँ, पीछे तक आवाज आ रही है। आप सब मिलके बोल रहे हैं, मेरे पास तक आवाज नहीं आ रही। एक बार तेज बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार कम से कम ऐसा बोलिए कि अर्जुन इनक्लेव तक तो आवाज जाए, जो भूत प्रेत इत्यादि आत्माएं हैं सब भाग जाए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर First ओम of विष्णुपाद all, my अष्टोत्तर Gurudev, शत श्री Ashtotter श्रीमती Sat Shrimad भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी Shrilavan महाराज Goswami Maharaj एवं नित्य लीला Nitya Leela विष्णुपाद Vishnu अष्टोत्तर Vishnupada शत Sat श्री Shri श्रीमद Srimad भक्ति वेदांत Bhaktivedanta श्रवण गोस्वामी Shrilavan महाराज Goswami Maharaj नित्य लीला Nitya Leela विष्णुपाद Vishnu अष्टोत्तर Vishnupada शत Sat श्री Shri श्रीमद Srimad भक्ति वेदांत श्रवण Bhaktivedanta नारायण Narayan गोस्वामी Goswami महाराज Maharaj के चरण कमल में I offer अनंत अनंत कोटि my दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी I कृपा offer my की याचना Dandavat करता हूँ। तत्पश्चात pray यहाँ for पर their उपस्थित mercy and सभी present भक्तवृंद श्रोता मंडली सभी को व्यक्ति होते listeners and audience. आप I सब लोग परम offer my सौभाग्यशाली thanks. हैं। You all are very एक fortunate. निवेदन करना चाहूंगा, I want to request थोड़े समय के लिए अपने मन को घर से खींच करके यहाँ पर रखिए, एक दो श्लोक की चर्चा your करेंगे heart from the house. और यहाँ पर के.एम. पांडे जी ने प्रसाद की भी कृष्ण कृपा प्रभु ने प्रसाद की व्यवस्था करी हुई है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। Prasadam, so there is no worries. ये जो सुयोग है, This opportunity, ये वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। this is very rare. माध्यम भले ही कृष्ण कृपा दास जी हैं, He becomes the लेकिन source. Krishna Kripa बिना becomes गुरुदेव the की source. इच्छा की ये चीजें But संभव नहीं। without Gurudev's गुरुदेव माध्यम तो किसी को बनाते हैं, mercy, it is not लेकिन possible. वास्तविक कर्ता धर्ता वही है। Make some ये person निज the जीवन का source. अनुभव But है, actually, this is the मेरा अपना अनुभव हो, कोई बात नहीं। ये बात स्वयं कृष्ण कृपा दास प्रभु भी बता Krishna सकते Kripa हैं, Das, और यहाँ Prabhu, पर he जितने can भी tell, लोग हैं and all the बता सकते Prabhu, they can tell that कि गुरुदेव everything ही in our life is the प्रेरणा mercy देके of हृदय में ये सारी चीजें Gurudev करवाते हैं, himself give the लेकिन हमारा inspiration अपना in ये their heart. सामर्थ्य नहीं It है is not कि हम our लोग efforts ऐसे or our आध्यात्मिक कार्यक्रम capability आयोजित that कर people सकें can arrange बिना these kinds of गुरुदेव की programs इच्छा के without the संभव desire of नहीं है। Gurudev. This is not इसलिए possible without the desire यदि of कोई ये Gurudev. सोचे कि ये So if कार्यक्रम मैं करवा रहा हूँ या people मेरे can पास think that कुछ I है, am तो ये doing संस्था these क्या है? programs, एक it is done by me. अज्ञानता So है, that is क्योंकि called बिना गुरु की कृपा के कदापि संभव नहीं है। ऐसी मेरे गुरुदेव की विशेषता है कि वो आपके हृदय में कोई भी बात होती है, वो उस बात को जान जाते हैं, और तो और वो कभी आदेश के माध्यम से नहीं बोलते, वो क्या करते हैं उसको हृदय में Gurudev संचारित doesn't करते say them in ये the ऐसा words नहीं कि मैं directly. ये He बात gave the inspiration अतिशयोक्ति in the के लिए heart of बोल the रहा हूँ। person. ये I'm not अनुभव की बातें speaking हैं, this like ये वही समझ सकता है जो श्री गुरुदेव से that person जुड़ा हुआ है। ये understand सब जो these ये राधा things सुंदरी who इत्यादि ये सब are- बच्चे हैं, who इन लोगों के अपने are जीवन in का निज relationship with अनुभव है Gurudev, who are कि associated with कैसे Gurudev. गुरुदेव This is हृदय the में experience उसको of कुछ बोलते नहीं, आपको Radha कुछ Sundari. इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, They गुरुदेव will की not यही give the क्षमता है, instruction of लेकिन आपकी उस इच्छा जो they आपने will not की give हुई the है direction to the उसका वो directly, but they दमन will give करके the भक्ति inspiration राज्य in में your आपको heart. खींच They के will- लगा देते they हैं। will keep you यही in the bhakti. मेरे गुरुदेव की विशेषता That है is the और speciality of महिमा my है। Gurudev. और एक These are बात the glories बताऊं, of my Gurudev. अपने गुरुपाद पद्म की महिमा का वर्णन तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ की बात मैं बतलाऊं, बहुत सारे ऐसे डिवोटी Everybody हैं, ऐसे glorify भक्त their हैं Guru Pad Padma. जो अनायास ही आप पूछेंगे वृंदावन इत्यादि, If you will go to तो यही बात Vrindavan, आती है, अरे वो महाराज जी, अरे उन will महाराज जी say की that श्रद्धा की Maharaj सीमा ji, का तो कहना ही क्या। his faith स्वयं is so मेरे high. गुरुदेव के My गुरुपाद Gurudev, पद भी Gurupad Padma, यही my Gurudev बात Gurupad बताते हैं। Padma. आप ये बात They समझ used सकते to हैं say like कि this. मेरे जो गुरुदेव हैं वो कैसे इतने प्रिय है, इतने करुणादायक My है। Gurudev- इसका my एक Gurudev दृष्टांत so humble. देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे दो पिक्चर लगी हुई है, See, there जो are pictures. वास्तव में ये पिक्चर मत समझना They are साधारण। not- they are यहाँ पे ये pictures, भोजन they are not विद्यमान ordinary हैं। pictures. They are- एक श्री भक्ति वेदांत One is वामन गोस्वामी महाराज और दूसरे हैं भक्ति वेदांत नारायण one गोस्वामी। is Pujapad Vam- ये दोनों आचार्यों की ऐसी महिमा जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भक्ति की, कृष्ण भक्ति They की पार preach लादी। the bhakti ये entire भक्ति world. वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने नाम का पहला अक्षर दे दिया हुआ, He gave the first word of और his श्री भक्ति वेदांत word नारायण Va, गोस्वामी महाराज जो है and Bhakti उन्होंने अपने Vedanta Narayan पहले Goswami नाम का अक्षर दे Maharaj, दिया then नाम, the और starting ये Na दोनों he मिलकर बन गया gave, his combined तो become ऐसे one हैं, name. ऐसी कृपा पात्र हैं So मेरे गुरुदेव this अपने is गुरुपाद our के। Gurudev. तो यहाँ से These are ये the बात glories of स्वतः our Gurudev. निकल के आती है So from this कि thing it इनकी comes कृपा के बिना that हम without कहें his कि mercy, कुछ भक्ति कर सकते हैं we can do some या कोई bhakti, कार्य कर सकते हैं, we ये can do सदा any सर्वदा activities. असंभव है। It is ये impossible. मेरे अपने जीवन का निज अनुभव This है। is
वो experience जानेंगे of my तो own आपको life, कहाँ पे आप गिरे हुए हैं, पड़े हुए where हैं, you are so वहाँ से fallen, आपको and उठा He के will आपको take you out बहुत from सेवा में that लगा place, देंगे। and He will और keep आप you in ये the service सोचेंगे of कि the मैं Lord. कर रहा हूँ, If you मैं think करता I am हूँ, doing, I तो am the doer, कभी भी आप सेवा कर ही नहीं then you will be not सकते। able to इसलिए do क्या any करना kind है, of service. संपूर्ण रूप से So what you have to बिना do, विचार किए, without thinking, बिना कुछ without सोचे thinking समझे, any, ऐसे without गुरुपाद स्वामी के thinking, चरणों में अपने you आप को just समर्पित you करने should में कोई संकोच नहीं you should करना surrender चाहिए। it कोई प्रश्न in करेगा, the lotus feet of समर्पित कर दिया, Gurudev. गिर गए तो आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि If you ऐसे surrender गुरुपाद but you स्वामी fall के चरणों down, में यदि आप बिना विचार किए if you अपने without आप को thinking समर्पित you just करोगे, surrender पहली in चीज तो आप lotus गिरोगे feet, नहीं। first thing that पहली you चीज will तो never आप fall गिरोगे down. नहीं, इस First चीज thing की संपूर्ण गारंटी this है। is guarantee that you will कहते never हैं fall यदि down. आप बाई चांस But if by गलती से chance, गिरे, by mistake you fall दृष्टांत down, देते हैं, मान लो आप गुरुपाद For पद्म के example, चरण में आंखों पर काली पट्टी बांध करके दौड़े, if you will put कह रहे the हैं black दौड़े cloth on your तो वो नाली नहीं eyes, होगा, वो गड्ढा नहीं होगा, वो And you कचरा are नहीं होगा, running, वो कांटा नहीं होगा, then you या will तो आप गिरोगे नहीं। और यदि गुरुपाद पद्म के चरणों की तरफ दौड़े और गिर गए तो वहां पर देखोगे राधा गोविंद के दर्शन होंगे। ऐसे you will मेरे run, गुरुपाद पद्म putting की cloth on महिमा है। your थोड़े समय में eyes, ऐसे there will आचार्य be की महिमा no का thorns, there वर्णन will be किया no जा सकता। mud, there will be no हम लोगों की rain. समस्या If you क्या will है? fall हम down, लोग ऐसे if by आचार्यों chance की you are महिमा falling को down, नहीं then you will जानते। fall down नहीं in the जानने lotus के feet of कारण Radharani and हम Krishna. लोग इतना एक हफ्ते का जो कार्यक्रम था, So we have done इसको this वास्तव one में week of बहुत से program. लोगों ने सार्थक किया, बहुत से Many लोगों people have ने supported गंवाया। this program, and लेकिन many ऐसे people have lost आचार्यों this का मिलना opportunity. बड़ा ही दुर्लभ But है। this is ये very rare बात opportunity of getting मैं a आप लोगों chance को to रिझाने के लिए कह रहा, chance बात me, ऐसी नहीं है। ये बात associate आपको with these आज kinds नहीं तो of, कल अनुभूति होगी। आप saintly ये बात persons. समझ पाएंगे One day you will कि be ऐसे able to गुरुपाद understand पद्म that these कृष्ण kinds कृपा प्रभु को of माध्यम बना करके इस saintly अर्जुन एन्क्लेव persons में that, आते थे, लेकिन they हम make समय the नहीं source दे to पाए। the तब Krishna क्या रहेगा Kripanas, कि अब पछताएं होते क्या later on जब you will चिड़िया think चुग that गई थी। that तो now the पछताने से time कोई लाभ has होगा finished. नहीं। इसलिए The time आप सब has सबसे passed. यही प्रार्थना है So I कि am बिना विचार requesting किए to ऐसे everyone गुरुपाद that पद्म without की thinking for a शरणागति second, ग्रहण you should करके take the अपने shelter इस of, मनुष्य you जीवन should को surrender to the सार्थक कर lotus feet लीजिए। of these kinds और of Guru आप and या make your कोई भी life इस ब्रह्मांड में successful, तब this तक human सुखी being नहीं हो सकता। successful. You एक cannot be दृष्टांत happy देता in हूँ, ये this बोल करके world. मैं अपनी वाणी को विराम I देता will- हूँ। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, Everybody wants to be लेकिन happy कब in तक this world. सुखी नहीं हो They will सकते be not जब तक happy ऐसे until and गुरुपाद unless पद्म का सानिध्य they नहीं will मिलेगा, not ऐसे associate with गुरुजन के this kind अंगत्य of में रह करके Gurudev, and they भजन will not करेंगे। do हम सोचे कुछ bhajan भजन in कर ले, association ये with कदापि this संभव kind नहीं। of जब saintly गुरुदेव person. बाहर चले जाते हैं, विदेश We चले will जाते think that हैं, we can do तो bhajan जितने on भी its भक्त own. हैं, ये When people, but this is wrong. स्थिति ऐसी So when है, people are, कहते हैं when गुरुदेव people कब is going आएंगे, outside जब the गुरुदेव world, आते हैं तो लोगों का in- ठीक से कुछ साधन भजन हो पाता है, So नहीं तो when सब Gurudev is रोते हैं, coming बिलखते हैं, ऐसी back स्थिति in their है। हमने country, देखा है दिल्ली then इत्यादि everybody में। bhajan starts. तो ऐसे People are गुरुजन के crying चरणों में when हमें they leave their समर्पित country. होना पड़ेगा, We should तभी हम सुखी surrender, हो सकते हैं। surrender to the कैसे? lotus feet of ऐसे this गुरुपाद kind of भक्त जिन्होंने Gurudev. अपने जीवन को Then only भगवत we सेवा can में be नियुक्त happy, किया हुआ because है, he इनसे himself has क्या करना surrendered his पड़ेगा? life to हरिनाम their ग्रहण gurus, and करना we should पड़ेगा। accept जब Harinam गुरुदेव from बताते हैं ये बात Gurudev कि used to गुरुपाद say भक्त this. के मुख से जो वाणी हरिनाम निकलता है, वो Whatever the शब्द word ब्रह्म होता है। Harinam वो हमारे coming from हृदय the को lotus सीधा feet of जाके Gurudev, that is टच called करता Shabd है। Brahm, and that is और touching तब हम जब उस our नाम को heart. करते हैं, And तब वो what वाइब्रेशन then हमारी Harinam we are जाती है। doing, then that तो इसलिए vibration. पहला नियम हमें नित्य भगवान का first नाम we करना have to पड़ेगा। do यदि कोई Hari सुखी Bhajan. होना चाहता If है anybody तो wants to do मनुष्य Hari जीवन Bhajan, को सार्थक करना चाहता है तो if कंडीशन anybody है wants शब्द है। to make पहला their life हमें हरे कृष्ण successful, महामंत्र they का should जप do करना Hare पड़ेगा। Krishna क्या? Mahamantra. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, And second एकादशी one, की व्रत का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा, they should चाहे कोई माने observe the या Ekadashi ना fast. माने। तीसरा, हमें third, नित्य प्रति तुलसी जी में जल every अवश्य day ही देना we have चाहिए। to give और water कल to से the- offer water परम to पवित्र the पावन Tulsi कार्तिक Maharani. महीना From प्रारंभ tomorrow- हो रहा है। कल से From नित्य tomorrow प्रति Kartik month ठाकुर is जी को क्या starting, करना so है? every day what you हमें have to दान do, करना you have है to और offer आकाश lambs, में ghee,
lamps करना है। to इससे the अनायास Thakur ही ji हमारे and the sky संपूर्ण प्रकार also, के विघ्न जलकर and नष्ट हो in this जाएंगे way all the problems और in our हमें life ऐसे will प्रभात vanish करने की कृपा and we will मिलेगी। get the बस mercy of अंतिम लाइन बोल के and वाणी को last विराम line देता I हूँ। will
I was गोस्वामी reading तुलसीदास that जी ये Goswami बात डिक्लेयर Tulsidas करते he हैं is और ये declaring that कंफर्म करते and हैं is कि भाई confirming that कमठ पीठ जामहि बरुबारा बंधा सुत बल कामिक मारा कि कछुए के पीठ पर that on the बाल उग turtle's जाए जो सर्वथा असंभव hair है can कहते grow. हैं मैं मान लेता हूँ किसी काल It में is उग जाए। impossible, but बंधा I can सुत बल कामिक still मारा कह रहे हैं किसी पांच का I can पुत्र still किसी को मार दे पांच को तो पुत्र होते ही नहीं फिर भी कह रहे a हैं किसी को person, मार a दे lady who मैं cannot ये get the मान लेता हूँ babies can get the फूल नग पर babies. बहुविधि फूला जीव न लाभ It's not सुखाई possible, भरी। but still I कह रहे हैं आकाश में पुष्प खिल in सकते the हैं sky मैं there ये can बात be मान flowers. The flowers can जो grow कि in the सदा सर्वदा sky. असंभव है It is impossible, but I can accept. और बिना भगवान के But without Lord, नाम को किए हुए इस without जगत को doing पार कर जाए सुखी हो जाए without ये chanting सदा Lord's सर्वदा name, a असंभव है person can मैं be great इसे from नहीं this मान world. सकता। ये This आचार्य is इतनी बातें बोल impossible. रहे This हैं is फिर भी मेरे जैसे impossible. ज्ञानी Our इस बात को Acharya समझ नहीं पाते is तो इसलिए declaring this क्या thing. करना है So what we यत्र are doing योगेश्वर is कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा जहाँ पर योगियों के ईश्वर श्री कृष्ण है we और are उनके Krishna, भक्त ऐसे गुरुजन where हैं Krishna यदि and कोई his उनकी शरणागति ग्रहण कर ले devotee, if तत्र that श्री person विजया accept the तत्र if वहाँ he, that पर person लक्ष्मी है accept वहाँ पर the विजय है shelter वहीं पर of सब that कुछ person, विराजमान if है he निधि surrender बोल to the करके मैं lotus अपनी feet वाणी of को that विराम देता person, हूँ then वाणी that person's छात्र life is successful. अब आप कहिए. Now will be Kirtan. अब ले लो फिर हम प्रसाद पाया थे कीर्तन होगा ना. Those who want to keep watching the Kirtan kindly switch to the main broadcast on Valmadhuriam. Later when we switch, the Katha starts, we'll start another broadcast in English.